Morning to all dear students of class 8 girls. Today we are going to revise first chapter physical quantities and measurement for your online assessment test. Okay, so girls, chapter number 1 physical quantities and measurement हम already बहुत डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके गर्ल्स, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए काइंडली आप इस चैप्टर में हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को आप इससे रीड आउट करें. ओके अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है गर्ल्स, तो आपके पास व्हाट्सएप पे आपकी वीडियो ऑलरेडी, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी. अगर आपके पास आपकी कोई वीडियो आपसे मिस हुई है गर्ल्स, तो आप इसे अपने स्कूल के पेशावर मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल वर्सा कैंपस के यूट्यूब चैनल से आप इसे अगेन भी जो है वो अपने पास आप इसे देख भी सकते हैं गर्ल्स, और अपने पास आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. ओके लेकिन गर्ल्स, आपका फिजिक्स का ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट जो है वो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं. ओके सो एमसीक्यूज़ के लिए अपने चैप्टर को, हर एक चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट में हर एक चीज़ को रीड आउट करेंगी. ओके फिजिकल क्वांटिटीज़ एज इट नेम इंडिकेट गर्ल्स के एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्जर्व, विच कैन बी measured, so that is known as physical quantity, such as if we take an example of weight of an object. So weight of an object and mass of an object, or mass of an object. So weight of an object and mass of an object can be observed and that can be measured. So it's mean it is a type of physical quantity. Okay. So introduction, first one chapter girls, that is first one topic in your first chapter, that is introduction to physics. Okay introduction to physics में हम already जो है वो physics को हम बहुत डिटेल से जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. Okay word physics is derived from a Greek word physis. Okay and girls, the word physis mean nature. Okay or physic, the word physic mean knowledge of nature. Okay proper definition of physics is already given in your book girls, that is it can be physics is the branch of science that involves the study of physical universe, matter, energy and how they are related. Okay matter mean girls anything which can occupy space and has mass or weight, so simply that is known as matter. Okay there are 4 states of matter girls. One is known as solid, liquid, gas and plasma. Okay so solid mean girls any rigid and hard object is simply known as solid. Okay and properties of solid already properties of solid को हम already discuss कर चुके हैं. Okay liquid mean girls any material which can be observed but which can flow. Okay so that is simply known as liquid. properties of liquid भी हम discuss कर चुके हैं. gas की properties भी हमने discuss की है, plasma की properties भी discuss की है. second one term which is related with the definition of physics, that is energy. Energy mean girls ability of an object to do work. Okay and ability of an object to perform any type of task is known as energy. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है आपके पास, केमिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है आपके पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपके पास. ओके इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स भी हमने डिस्कस किया था गर्ल्स. ओके इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है वो आपके पास डिस्कवर्ड हुए विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. ओके सो जितनी भी आपके पास मेजर डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री, बियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मेडिकल. ओके सो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्कवर्ड हुई है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. ओके जैसे कि मेडिकल फील्ड में हम सीटी स्कैन यूज़ करते हैं, एमआरआई मशीन्स, पीटी हम यूज़ करते हैं, एक्सरेज मशीन्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र मशीन्स हम यूज़ करते हैं. ओके सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ physics. Okay similarly girls, in our daily life we use different types of equipment, different types of appliances such as air condition, refrigerators, deep freezers. Okay so all these types of technologies are discovered with the help of physics. Okay so girls, kindly read out each and everything of your first chapter. Okay फर्स्ट चैप्टर में हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को आप प्लीज़ रीड आउट करिए. ओके सेकंड टॉपिक हमारे बुक में गिवन है गर्ल्स, पेज नंबर 3 पे, कुरान एंड फिजिक्स. ओके एंड गर्ल्स यू नो इट वेरी वेल गर्ल्स दैट देयर आर more than 700 verses in the Quran that deals with the
physics that deal with the natural phenomena. Okay, some of holy verses are given in your book. So girls, for your online assessment test, kindly read out its English translation. Just English translation को read out करें. ओके, अरबिक की लर्निंग जो है वो मतलब आपके पास आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास ये ट्रांसलेशन जो है ये आपके पास कहाँ पे है. ये तो खैर अभी आपके MCQ बेस्ड टेस्ट है. सो जस्ट आप इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को रीड आउट करें. ओके, फिर हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट किया था इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, चैप्टर पेज नंबर 4 पे गर्ल्स. थर्ड वन टॉपिक कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड. ओके, फर्स्ट वन साइंटिस्ट इज याकूब किंदी. Okay, and Yaqub Kindi, girls, you know very well that he was born in Basra, Iraq. Okay, and he produced extensive research monograph on meteorology. Okay, specific gravity, tide. Okay, and his most important work was done in field of optics, especially on reflection of light. Okay, second one scientist that is Ibnul Haytham. Okay, that is Ibnul Haytham. And Ibnul Haytham was born in Basra, Iraq. Okay, and he was a great scholar of his time. Okay, and his greatest work is the book on optics named as Kitabul Manazir. Okay, and he is also considered as the inventor of pinhole camera. Okay, the next one scientist which is given in your book, that is Al-Biruni. Okay, and Al-Biruni is Afghan scholar and he wrote about 150 books on physics, cosmology, geography, culture, archaeology and medicine. Okay, he also discussed the shape of earth, the movement of sun, moon and phases of moon. Okay, two Pakistani scientists, the contribution of two Pakistani scientists, that is one is Abdul Salam and the next one is Dr. Abdul Qadir Khan. Okay, and you know it very well girls that Dr. Abdul Salam was a Pakistani theoretical physicist. Okay, and he received Nobel Prize in 1979 in physics with the Sheldon Glasgow and Steven Weinberg for his contribution to the electroweak unification theory. Okay, and he was the first Pakistani to receive a Nobel Prize in science. Okay, the next one scientist is Dr. Abdul Qadir Khan, girls. Okay, and as I told you that he was born in 27 April 1936. Okay, and he is a Pakistani nuclear physicist and a metallurgical engineer. Okay, who found the uranium enrichment program for the Pakistan atomic bomb project. Okay, he found and established Kahuta Research Laboratory in 1976 and he served both as senior scientist and Director General until he retired in 2001. Okay, so girls, the next one topic which is given in your book on page number 6, that is branches of physics. Okay, so girls, kindly read out all the branches of physics. Okay, first one is mechanics, which is related with the motion of material object under the action of force. Okay, when force is applied and object change its state of rest into motion, so that is simply known as mechanics. Okay, any object which is in state of motion such as a moving ball, flying birds, okay, moving vehicles, all of these are examples of mechanics. Heat and thermodynamic. Heat means it is a form of energy which flow from one body to another body. Okay, thermodynamics, transformation of heat energy into other form of energy. Okay, optics का भी हमने discuss किया that it is related with the nature of light. Nature of light means propagation, reflection, refraction, dispersion and wave property of light हमने discuss किया था. Electricity and magnetism भी हम already discuss कर चुके हैं. Okay.